Hello students, how are you? Hope you are doing well. Now the question is, a wire of uniform cross section and resistance of 12 ohm is bent in the shape of circle as shown in the figure. A resistance of 10 ohm is connected diametrically opposite ends C and D. A battery of EMF 8 volts is connected between A and B. Determine the current flowing through the arm AD, this particular arm. So the question is based on the basic concepts of the circuits. In this particular circuit, this wire is in the form of a circle, and it is given that the resistance of the whole circle, is 12 ohms. It is 12 ohms, and this particular angle from the center to these ends, that is between A and B, this angle is 120 degree, because this is given as 60 60, so total of 120 degree. It means that this particular 12 ohm resistance is divided into two sections. One is this smaller arc, one is this larger arc resistance. Now this particular wire is assumed to be uniformly distributed. The resistance is uniformly distributed throughout the wire. So we can say that this section is having a resistance of 120 upon 360 multiplied by 12, which is nothing but this is equal to 4. This is equal to 4 ohms. So we can say that this is 4 ohms. Now 4 ohm for this section and 4 and 8 ohm for this section. It means that this 12 ohm is subdivided into two sections of wire. This arc is having a resistance of 8 ohms and this arc is having a resistance of 4 ohm. So this is the basic situation. This is the situation here. Now what happened that there is a connection of this resistance here between C and D. So it is very much similar to a Wheatstone bridge. Now in this particular Wheatstone bridge, you can easily see that if this is the midpoint, if it is a midpoint, then this 8 ohm is subdivided into two sections of 4 ohm resistance each. It means that between AC the resistance is 4 ohm and between CB the resistance is 4 ohm. Similarly, this whole 4 ohm resistance between AB is subdivided into two sections of 2 ohm and 2 ohm each. Now this is a perfect symmetrical situation. In this perfect symmetrical situation, you can easily see that from the balance condition of the Wheatstone bridge, the simple concept is take the product of opposite arms and equalize them. For example, this particular arm AC, its resistance is 4. This particular arm DB, its resistance is 2. Equalize it with this particular arm's resistance, AD's resistance 2 ohm, multiplied by CB's resistance, which is 4 ohm. So we can say that the bridge is in the balanced state. And when the bridge is in the balanced state, no current will flow through this particular 10 ohm resistance. This is basically redundant. There is no use of this particular resistance. No current will flow in this particular resistance. So the situation of the circuit looks like this. We can simplify this particular circuit, that is in the balanced Wheatstone bridge state, as 4 ohm, 4 ohm, 2 ohm, 2 ohm. This point is A, this point is B, this point is C, and this point is D. Now this is the 8 volt battery supplying the particular current in these two parallel branches. Now we have to find out the current in AD branch. Now in the AD branch, we have to find out the current. Now these two resistances are in series, 2 ohm, 2 ohm, these are in series, and we can say that the current flowing through this particular arm, that is ADB arm, it is equal to, current is equal to the total voltage. This total 8 volt voltage is applied across AB. It means that the current in this particular branch, suppose it is I1, so I1 is equal to 8 divided by 2 plus 2, which is 4 ohm, which is equal to 2 amperes. So we can say that in this particular branch from A to D and then from D to B, the current flowing is 2 ampere. So this is the final answer. This is the final result. Now let me explain the whole thing in Hindi. यहाँ पे एक सिचुएशन दी गई है, एक सर्किट दिया गया है
इस सर्किट में हमसे पूछा गया है एडी ब्रांच में करंट क्या होगी। यहाँ पे एक वायर को एक सर्कुलर फॉर्म में बेंड किया गया है। वायर की टोटल रेजिस्टेंस 12 ओम दी गई है। वायर को कुछ इस तरह से बेंड किया गया है कि सेंटर से यहाँ पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है लोअर आर्क में वो 60 + 60 दैट इज 120 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगी बिटवीन ए बी वो होगी 120 अपॉन द टोटल एंगल विच इज 360 मल्टीप्लाइड बाय 12 विच इज 4 ओम्स। इसका मतलब ए से बी के बीच में पूरी रेजिस्टेंस 4 ओम होगी और बची हुई 8 ओम रेजिस्टेंस जो है लार्जर आर्क में होगी। अब यहाँ पे ठीक मिड पॉइंट पे इन पर्टिकुलर आर्क्स के मिड पॉइंट पे सी और डी के बीच में एक रेजिस्टर 10 ओम का लगाया गया है। तो इसका मतलब इस 8 ओम रेजिस्टेंस को हम 2 इक्वल पार्ट्स यानी कि 4 ओम ईच में सब डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से ए बी सेक्शन के 4 ओम को हम डिवाइड कर सकते हैं इक्वली बिटवीन 2 ओम एंड 2 ओम ईच। यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो रेजिस्टर लगा है हमें देखना होगा कि इसमें करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है। व्हीटस्टोन ब्रिज की सिचुएशन है। व्हीटस्टोन ब्रिज में जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि अपोजिट आर्म्स के प्रोडक्ट को हम इक्वलाइज कर सकते हैं बैलेंस स्टेट में। यानी अगर इक्वल आर्म्स के प्रोडक्ट बराबर आते हैं तो हम कह सकते हैं दैट द ब्रिज इज इन द बैलेंस स्टेट। यहाँ पे इजीली ऑब्जर्व भी हो रहा है। ए सी ब्रांच की रेजिस्टेंस 4 ओम, डी बी ब्रांच की रेजिस्टेंस 2 ओम, 4 × 2 is 8। सिमिलरली ए डी ब्रांच की रेजिस्टेंस 2 ओम, सी बी ब्रांच की रेजिस्टेंस 4 ओम, 2 × 4 is 8। इट मीन्स दैट द ब्रिज इज इन द बैलेंस स्टेट। और जब ये बैलेंस स्टेट में होगा कोई भी करंट इस आर्म सी डी में नहीं जाएगी। सारी की सारी करंट जो ए सी से होती हुई सी डी के सी बी की तरफ चली जाएगी, ऐसे ही ए बी से करंट होते हुए डी बी की तरफ चली जाएगी। अब इस करंट को निकालने के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि इस रिडंडेंट एलिमेंट को हम हटा देते हैं और यहाँ पे करंट निकालते हैं बिटवीन ए बी। तो यहाँ से करंट निकालने के लिए हम देख सकते हैं कि 8 वोल्ट पूरा का पूरा अप्लाई हो रहा है ए बी के बीच में और हम सिंपल ओम्स लॉ लगाएंगे। दैट इज द करंट इज वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। वोल्टेज इज 8 एंड द टोटल रेजिस्टेंस इज 4, so 8/4 is 2 ampere. So the final result is 2 ampere. So hope you understand the solution. Thank you.